Good morning, students. Today's next part is chemical reactions and stoichiometric calculations. First of all, what is stoichiometric calculations? The calculation based on a balanced chemical equations are known as stoichiometric calculations. The calculations based on a balanced chemical equations are known as stoichiometric calculations. Now, the steps involved in calculations of stoichiometric problem. Steps involved in calculations of stoichiometric problems. First step, write the balanced chemical equation of chemical reaction. You have to write down the balanced chemical equation of chemical reaction. Second one, write the number of moles and relative masses or volumes of the reactants and products. What is the second step? Write the number of moles and relative masses or volumes of the reactants and products. Third step, relative masses or volumes should be calculated from formula mass at STP, formula mass at standard temperature pressure. Okay, and last one, apply the unitary method to calculate the unknown factors. Apply the unitary method to calculate the unknown factors. Okay, now first problem on the basis of stoichiometric calculations. Calculate the mass of carbon dioxide and water formed. Calculate the mass of carbon dioxide and water formed on complete combustion of 24 gram of methane. You are given 24 gram of methane and 24 gram of methane on complete combustion. How many mass of carbon dioxide and water formed? You have to calculate the mass of carbon dioxide and water formed after the complete combustion of 24 gram of methane. Atomic masses of carbon, hydrogen and oxygen are: carbon is 12, hydrogen is 1 and oxygen is 16. First of all, you have to write down the balanced chemical equation. So therefore, the balanced chemical equation is CH4, methane, that is gas, plus 2O2, gas, gives methane on complete combustion produces carbon dioxide and water. So that gives carbon dioxide, 1 mole of carbon dioxide and gas, and 2 moles of water vapors, that is gas. Okay, so one table is given. एक टेबल यहाँ पर दिया है, मैंने ड्रॉ किया है, टेक्स्ट बुक में टेबल नहीं है और सिस्टमेटिकली मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है. फर्स्ट टेबल इट इज़ फॉर रिएक्शन, सेकंड table it is for molar mass, and third table it is for given mass. You are given 24 gram of methane. Okay, molar mass of methane. इससे पहले हमने मोलार मास कैसे निकालना है वो हमने इससे पहले देखा है. ओके, मीथेन 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन, दैट गिव्स 16 ग्राम ऑफ मीथेन. Oxygen, 1 mole of oxygen is equal to 32 gram. So therefore 2 moles of oxygen it is equal to 64 gram. CO2, molar mass of CO2 containing 1 carbon and 2 oxygen. So molar mass of carbon dioxide is 44 gram. Water, 1 mole of water containing 18 grams. So therefore 2 moles of water it is 36 gram. And you are given how many grams of methane? 24 grams of methane on complete combustion produces how many grams of carbon dioxide and how many grams of water. Okay, so hence 16 gram of methane on complete combustion will produce 16 ग्राम मीथेन का कंबशन करने के बाद कितना कार्बन डाइऑक्साइड और कितना वाटर बन रहा है? 16 ग्राम ऑफ मीथेन ऑन कंप्लीट कंबशन विल प्रोड्यूस 44 gram of carbon dioxide and 36 gram of water. Okay, first of all about carbon dioxide. 16 gram of methane on complete combustion produces 44 gram of carbon dioxide. So therefore 24 ग्राम ऑफ मीथेन कैसे कैलकुलेट करना है? देखो मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है. 24 ग्राम ऑफ मीथेन के लिए फॉर्मूला है मास ऑफ मीथेन डिवाइडेड बाय मोलार मास इनटू मोलार मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड.
कार्बन डाइऑक्साइड का मास निकालना है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड के मोलार मास से इस रेशियो को मल्टीप्लाई करना है. सो 24 ग्राम ऑफ मीथेन इज इक्वल टू mass of methane divided by molar mass of methane into molar mass of carbon dioxide. So mass of methane it is given 24 gram and molar mass of methane it is 16 gram and into molar mass of carbon dioxide it is 44 gram. So therefore 24 divided by 16 it is 3 by 2 into 44. So that gives 66 gram of carbon dioxide. So therefore 24 gram of methane produced 66 gram of carbon dioxide. Okay. Similarly 16 ग्राम ऑफ मीथेन विल प्रोड्यूस 36 ग्राम ऑफ वाटर. देखो ऊपर टेबल में दिया है, मीथेन 16 ग्राम लिया है तो कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम बन रहा है और वाटर 36 ग्राम बन रहा है. तो 24 ग्राम के लिए वाटर कितने ग्राम बन जाएंगे तो निकालना है. सिमिलरली 16 ग्राम ऑफ मीथेन will produce, methane means CH4 will produce 36 gram of water. So therefore 24 gram of methane produces how many grams of water? So formula is mass of methane divided by molar mass into molar mass of water. Water का mass निकालना है इसलिए multiplied by molar mass of water. Okay. So therefore mass of methane 24, molar mass of methane is 16 into molar mass of water is 36. Reaction में कितना दिया है molar mass 36. 2 moles of water 36. Okay. So therefore 3 by 2 into 36 that gives 54 gram of water. Okay. So therefore 24 gram of methane produce 54 gram of water. This is the first example on stoichiometric problem. Okay. Second one, how much calcium oxide will be produced by decomposition of 5 gram of calcium carbonate, that is CaCO3. How much calcium oxide CaO will be produced by decomposition of 5 gram of CaCO3. तो पहले हमें क्या लिखना है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन. सो द बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज CaCO3 solid on decomposition. Decomposition means separation of this molecule on heating. कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने के बाद कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है. सो CaCO3 solid gives on decomposition CaO solid plus carbon dioxide gas. Okay. So 3 tables are there. First table it is for reaction, second table it is for molar mass and third table it is for given mass. Given mass कितना दिया है 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. ओके. सो मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 1 कैल्शियम है यहाँ पर. सो 40 एटॉमिक मास है कैल्शियम का, कार्बन का 12 और 3 ऑक्सीजन का 48. ओके. सो एडिशन ऑफ दिस 3 एलिमेंट्स गिव्स 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. ओके. कैल्शियम ऑक्साइड, calcium 40, oxygen 16, the addition of these two factor gives 56 and carbon dioxide that is 44. Okay. And you are given 5 gram of calcium carbonate on decomposition produces how many grams of calcium oxide. Okay. मैंने यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का भी मास निकाला है. ओके. सो 100 gram of CaCO3 on complete combustion produces 56 gram of calcium oxide. 100 gram of CaCO3 on decomposition produces 56 gram of CaO. So therefore 5 gram of CaCO3 will produce how many grams of CaO? कैसे निकालेंगे देखो. 5 gram of CaCO3 is equal to mass of CaCO3 divided by molar mass of CaCO3 into molar mass of CaO. जिसका मास डिटरमाइन करना है उसे रेशो से मल्टीप्लाई करना है. ओके. 5 ग्राम ऑफ CaCO3 इज इक्वल टू मास ऑफ CaCO3 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ CaCO3 इनटू मोलर मास ऑफ CaO. ओके. सो मास ऑफ CaCO3 इट इज 5 ग्राम, मोलर मास इज डिवाइडेड बाय 100 इनटू what is the mass of CaO, molar mass of CaO 56 gram. Okay. So calculation of 5 into 56 it is 280 divided by 100. सो 100 से 280 को डिवाइड करने के बाद 2.8 ग्राम आ रहा है. सो 5 ग्राम ऑफ CaCO3 गिव्स 2.8 ग्राम ऑफ CaO. ओके. सिमिलरली यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का मास निकालने को नहीं कहा है, मैंने यहाँ पर निकाला है. कैसे निकालेंगे? सिमिलरली 100 ग्राम ऑफ CaCO3 प्रोड्यूसेस 44 ग्राम ऑफ CO2. सो देयरफॉर 5 gram of CaCO3 produces how many grams of CO2? So the formula is mass of CaCO3 divided by molar mass of CaCO3 into molar mass of CO2. Okay. So
5 divided by 100, mass of CaCO3, that is 5, divided by molar mass 100 into molar mass of CO2 is 44. ओके, सो 44 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आएगा 220 डिवाइडेड बाय 100, दैट गिव्स 2.2 ग्राम ऑफ CO2. So therefore 5 gram of CaCO3 will produce 2.2 gram of CO2. That is the second problem on the basis of stoichiometric problems. Okay.